guys, welcome back to my channel. I am Surbhi and it has been such long time that I have done a YouTube video. So please take a moment and please subscribe to my channel if you like my content and give this video a big thumbs up because I have particularly made this video on your request, and people were requesting me to make this video which is beginner's kit for skincare. I do understand because even I am still a beginner only, and I do understand that we have a limited amount to spend, so we have to take care of both of those things, that we don't spend much money and still get a good products. So I thought let's make a video because मेरे पास है high end skincare products भी हैं but very minimum. So I just thought of doing a quick video on the skincare products that you can use, and this is something which I use on daily basis now. Let me start and quickly show you the pouch. Okay, so this is the pouch. Okay, this is from the Face Shop. Okay, जो sheet mask के साथ में आता है. So I have this weird habit. I won't call it actually weird. It's a good habit for me at least. I store all the boxes that comes, packages में या फिर something if I order something, and जो भी उनके packages and boxes होते हैं, I love to collect that. Okay, and they are very useful also because you can store a lot of stuff. So like this, मैंने इसको अपना स्किन केयर बैग बना लिया है. You can see a lot of things is right here, and it's very easy also for you to bifurcate which product is for what thing. And this is my skincare kit. Now it has so many things which will give you nostalgia, and this is something which I use on daily basis for my skin. And I have few options also like for face wash and everything, but this is like I'm going to give you one specific product or max two product in one category. This is not like going to be very confusing for you because a lot of people keep on telling me कि इतने सारे बता दिए हम कौन सा इसमें से लेंगे, अच्छा है वो अच्छा है. So ये जो मैं बताऊँगी that is for all skin types, and especially if you are someone who has oily skin or combination skin, तब तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे. बट ये नॉर्मल, आई थिंक नॉर्मल स्किन के लिए ही है, तो ये सबके लिए वर्क करेंगे, कुछ ऐसा नहीं है हार्मफुल. And without any further ado, let's just quickly jump. So the very first step for skincare is cleansing. Okay, now cleansing में भी दो टाइप्स होते हैं, like double cleansing है normally, but मैं अभी एकदम normal basic बताऊँगी कि एकदम beginner जब आप हो तो आप क्या कर सकते हो. Now for face wash, what I have is I have various face washes, but I'm just going to show you two which I use. So the first one is from Pond's. Okay, so this is the Pond's Flawless White Deep Whitening Facial Foam. Now basically it's not whitening or something like that, it's just a normal deep cleansing face wash, and it has a good foam quality. Deeply अच्छे से cleanse हो जाता है, and this does not dries off. Like इसमें जो charcoal वाला आता है, again that is my favorite. You can even use that. वो भी बहुत affordable है, ये भी बहुत ज़्यादा affordable है. ये तो इतना पूरा है, that is for 200 rupees, and अगर छोटा वाला भी आप लेकर आओगे सो वो भी आई थिंक मैक्स 50 रुपीज़ में आ जाएगा, टू बी ऑनेस्ट. एंड इसमें द अदर वेरिएंट इज़ अ चारकोल वन, बट आई फील कि वो थोड़ा सा स्किन को ड्राई ऑफ कर देता है बिकॉज ऑब्वियसली चारकोल है, बहुत ज़्यादा डीपली क्लेंस करता है, बट दिस इट्स द वन जो ऐसा बिल्कुल नहीं करता. द सेकेंड वन विच आई यूज़ रिलीजियसली एवरी डे, विच इज़ आई एम करंटली यूजिंग, is my favorite, and that is this. This is the Clean and Clear Morning Energy Aqua Splash Face Wash. So basically this is the cooling menthol one which is meant to be used for the morning refreshment, but I use it both the time, even on night and the daytime. जब मुझे कभी भी ऐसा लगता है ना बहुत ऑयली हो रहा है, गर्मी हो रही है या कुछ भी, मैं क्विकली इतना सा अमाउंट भी लिया और लगा लिया. इट्स अमेजिंग बिकॉज बहुत ज़्यादा कूलिंग कामिंग इफेक्ट्स हैं इसके, एंड बहुत जेंटल है स्किन पे. सो दिस इज़ अगेन फॉर ऑल स्किन टाइप, दिस इज़ ऑल्सो फॉर ऑल स्किन टाइप. यू कैन यूज़ इट एनी थिंग विच एवर इट्स ऑफ योर चॉइस. दिस इज़ फॉर 100 रुपीज़. इसका छोटा वाला वर्जन भी आता है आई थिंक फॉर 10 to 20 रुपीज़, जो नॉर्मल मॉर्निंग फेस वॉश वाला आता है, द वन विच हैज़ द येलो वाला जेल आई बिलीव. सो वो ये वाला बड़ा है, इसके लिए इतना लगता है. बट मैं बहुत फालतू की बात करती हूँ, आई नो मैं बोलने लग जाती हूँ फिर मैं चुप नहीं होती, बट दिस इज़ फॉर यू, सो प्लीज़ बेयर विथ मी. द सेकेंड थिंग विच कम्स इन इज़ आई थिंक स्क्रबिंग. या सो स्क्रबिंग या मास्किंग या कुछ भी, तो स्क्रबिंग तो हिमालय प्रोडक्ट्स, हिमालय वॉलनट वन, आई थिंक दैट इज़ फॉर 75 रुपीज़ और 80 रुपीज़. मेरे पास करंटली नहीं है, बट दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन यूज़. Apart from that, if you want to really scrub and use as a face pack, you can use a multani mitti. If not that, I have this Himalaya Purifying Neem face pack. Anyways, so this is for normal to oily skin type. I think क्योंकि जो dry skin है उनके लिए थोड़ा ये और dry हो सकता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्राई ऑफ हो जाता है, एंड
डीपली क्लेंस करता है बट हल्का सा ड्राइंग इफेक्ट है. सो इफ़ यू आर नॉर्मल टू ऑयली स्किन दिस इज़ अमेजिंग फॉर यू. इफ़ यू आर ड्राई स्किन यू शुड गो फॉर वॉलनट स्क्रब नॉर्मल और सम अदर फेस पैक कुक्यूम्बर और समथिंग लाइक दैट. हिमालय में उसका रेंज इज़ अवेलेबल. सो दिस इज़ फॉर 135 रुपीज़. अगेन ये सारे जो मैं दिखा रही हूँ बड़े वाले वर्जन्स हैं. यू विल स्टिल गेट 10 रुपीज़ वाला जो पाउच आता है वो भी है और छोटा वाला ट्यूब भी मिलेगा इसमें. सो अगेन दिस इज़ रियली गुड. अगर आपने इसको लगाया यू डोंट हैव टू वेट टू ड्राई ऑफ कम्प्लीटली. जब ये हाफ वेट होगा यू कैन स्टार्ट रिमूविंग और हल्का सा मसाज स्क्रबिंग भी किया. सो इट विल बी गुड फॉर यू. इट विल एक्सफोलिएट. The other thing which is now important, which is really very important, that is moisturizer. Now for moisturizer I have good range and which are very affordable and really good. So that is one is Lakme. अभी मेरे पास छोटा वाला ही है. This is for 40 rupees. Okay, so इसमें ऐसा एक बड़ा ट्यूब आएगा वो भी आप ले सकते हो. वो भी I think 100 to 120 रुपीज़ में आएगा एंड काफ़ी अच्छे से चलता है. मॉइस्चराइज़र यू डोंट नीड इतना सारा, you just need थोड़ा सा amount ना. So that's completely fine. So this is the Lakme one. The other one is from Pond's. This is the Super Light Gel Oil Free Moisturizer. This is again for all skin type. This is also for all skin type. This is particularly my favorite right now. And the other product is the Johnson's Baby Ka Cream. This is the Cotton Touch Newborn Cream. Moisturizes and helps protect newborn skin from dryness. So this is again very nicely moisturized cream and very gentle and soft. इसका भी texture is really good. It's non-oily, non-greasy. So 3 of these are really affordable for the beginner's kit. You can begin with these moisturizer on daily basis. Even you can use them on night time. Don't need to have a different night time cream. That's completely fine if initially you want to take care of your skin, which is must and you should take care of it. So you can begin with all of these products. These are like super affordable, super good and light on your skin and they are non-oily. So जो greasiness होती है पसंद नहीं आती है. मुझे नहीं पसंद greasiness, especially on my face. So that is really going to help you. Now other thing that I have is SPF, which is again very important. अब बहुत सारे SPF अवेलेबल हैं, SPF सॉरी, लेकिन हम एकदम अफोर्डेबल की बात करेंगे. So that is the Lakme one. ओके, दिस इज़ द मिनी वर्जन. दिस इज़ फॉर 99 रुपीज़. सनस्क्रीन थोड़े से एक्सपेंसिव साइड होते हैं, अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं फॉर हार्मफुल सन रेज एंड यू शुड नॉट स्टेप आउट विदाउट अ सनस्क्रीन. इवन घर पे भी हो तो लगाओ इसे. ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर जाएंगे तो दैट इज़ ऑल मिथ. बट स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग आउट, घर पे तो चलो वो तो लगाना ही चाहिए. नहीं भी लगाया तो भी बाहर जाओगे तो लगाना ही है. ओके, सो दैट वन थिंग हैज़ टू बी very clear and compulsory. So this is the Lakme Sun Expert. This is SPF 50, great, and this is Ultra Matte Lotion. Now this is light and non-sticky. I use this daily. Okay, you just need tiny amount. It has a little bit of white cast, but I'm completely okay with that. Really good one. It smells amazing. Lip balm. So I will start with the very basic, very basic, and that is this tiny bottle, the magic in the bottle. This is the Vaseline. ये ओरिजिनल वाला है, इसमें भी वेरिएंट्स है एलोवेरा वाला, बट आई पर्सनली लाइक दिस वन एंड आई लव माई लिप्स टू बी मॉइस्चराइज्ड ऑल द टाइम. सो आई कीप दिस वन फॉर बिगनर्स. अमेजिंग. 10-15 रुपीज़ में आता है. आई थिंक 5 to 10 रुपीज़ में आ जाता है. बहुत अच्छे से चलता है. सो यू कैन यूज़ इट. Apart from that, I have the baby lips from Maybelline. I have 2 variants. This is the normal one, the pink one, which has a slight pink tint, and this is the watermelon baby lip. Is really good. This is also really good. Personal recommendation to मैं यही दूँगी. Apart from this, one more thing is my favorite. That is this Himalaya lip butter. This is the cocoa butter. This is moisturizing, super amazing. And this is for I think 60 rupees. This is again because ये small tub आता है and this lasts for long time. So this is really good. It is for 60 rupees and it smells heaven. For nighttime skincare you can involve these things. Oh, one more thing that I forgot to show y'all is a toner. So initially if you skip that it's fine, but if you want to know about a good toner, I forgot to keep it right beside me. So what you can do is you can go for Biotique Cucumber Toner. That is amazing and that is affordable. That retails for 175 rupees, but for a toner it's really good. So you can definitely go and check that out. And last thing that I have is this
orange luminous oil. This is from the Head, and this is the nighttime serum. So this is a repairing serum. What I do is ये सारे प्रोडक्ट्स मैं डे टाइम में यूज़ करती हूँ. रात को आई जस्ट गो एंड वॉश माई फेस विद दिस क्लियर एंड क्लियर, एंड देन आई go in with this oil. It has a little thick consistency, but 2 drops is enough for my entire face, and I massage my face properly and then I sleep. This is very beginner friendly, so I hope that you guys like this video. So please do share and comment below and let me know if you want to know about more, and do subscribe to my channel. Bye, see you next time.